Hello everybody, welcome back to another session on Java programming. This is a Java specialist course. We have not yet started off with Java as a language. What we are currently discussing is Java technology and its features. We have discussed some aspects about Java technology. Does any recollect what is that we have discussed in the last session? JVM is what we have discussed in the last session. Today, we plan to discuss another very important aspect about Java technology. That's a highlight of Java technology, and that's garbage collection. So today, we're going to focus on this concept of garbage collection, understand what this concept of garbage is all about. What, according to you, is a garbage? Something that is not in use. Something that is not in need. Very correct. Something that we do not require is a garbage. Believe me, this collection of garbage from the memory is a challenging stuff because how do you decide something that is there in the memory is no longer required? Now that's quite a challenge. As a C programmer, as an early C++ programmer, it was your duty as a developer to keep a track of whatever you do not need, and something that you do not need, if it is occupying some space, you really had to put in your efforts to clean up that particular thing from memory. That was quite a challenge. And if you forget to clean up that thing in the memory, the garbage may pile up to such an extent that over a period, you will not be left out with any memory for allocation. Yeah, that means you will fall short of memory and the programs would crash. This memory management is, when I talked about Java is like C, but without guns and knives, that guns were like pointers and knives were like this memory management. So you no longer have to worry about memory management when it comes to Java. Java has automatic memory management. That means you as a developer, whenever you need a memory, you can just go ahead utilizing whatever memory that you need. You can demand for memory. It will never happen that the Java program has crashed because you are falling short of memory. And reason for falling short of memory is there is some garbage in the RAM, in the memory. No, that will never happen. Your Java program will never crash. You may fall short of memory. Say your application requires memory and that much memory is not available in your machine, you may fall short. But not because there was some garbage that is occupying some space, and because of that your program has crashed. That will never happen when it comes to Java. Java does automatic memory management. So let's begin our discussion with this concept of garbage collection. So garbage collection implies that objects no longer needed by a program are garbage and can be thrown away. Even before I go ahead with this discussion, let us do a quick poll. All of those amongst you have either learned C or C++, just raise your hand. Either C or C++ जिन्हें पढ़ा है, raise your hand. सर परत एकदा करता प्लीज माझं नीट हे जातं ऐकून Louder. परत एकदा सांगता का काय बोलले तुम्ही माझं नीट जरा अनस्टेबल I said those amongst you who have either learned C or C++, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज भी पढ़ा हो तो raise your hand. सर शिकतोय W14 मध्ये Raise your hand. Okay, so Nilofer is the only one. Okay, so most of you are aware of either C or C++. So I can take this liberty to make a bit reference to C++. Now let us understand what happens. Those who haven't done C or some Rohit, you have not reached to that area topic of discussion right now, still try and understand. Now listen to me very carefully. We are talking about something which is very low level. In today's programming languages, through which you actually go ahead allocating memory, and you need memory because you need memory to store data, you need memory to store instructions. Any data on which your processor can carry out operation, that data needs to be stored in the memory. जब तक वो data memory में stored नहीं है, तब तक उस पे आप operation नहीं कर सकते. But there are two major sections of memory. Java में तो 5 है, but there are two major sections of memory. एक होता है heap और एक होता है stack. Stack is meant for, it's a working memory area. Heap is also a working memory area, but stack is managed by the system. But heap is an area which is made available for you and me as a developer for dynamic memory management. That means you and me as a developer can allocate memory and can release memory when you do not need it. जब जरूरत है तो आप allocate करो, जब जरूरत नहीं है तो आप उसे deallocate करो. That is something that we can do in C with some library functions like malloc, calloc, realloc, याद आ रहा है तो, और release करना है तो free. In C++, we could do it by operators like new
और operators like delete. That means move से आप memory allocate कर सकते थे और delete से आप memory delete कर सकते थे. But the biggest problem over there was if you allocate memory and if you forget to fail, that was crisis. यानी आपने memory allocate तो कर ली और फिर release करना भूल गए, that will still occupy in the heap even after that function is over. And then for some other function where you actually need memory, you will fall short of memory because that's already occupied by somebody else. So two major areas, heap and stack. Stack traditionally is managed by the runtime system. It's arithmetic memory area. Every variable that you may have been creating in your program, say if you're in C, you say int I. But when you say int I, you're saying I need to have a variable whose name is I, which is of type integer, जिसके लिए 4 bytes memory allocate करनी है. You don't tell how many bytes of memory to allocate. Its system allocates memory, gives that memory block a name called as I. It has its own address, and we can access that block of memory whenever you want to. But that variable int I gets created on the stack if you have written inside function main. So you'll get allocated on the stack. But then sometimes it so happens you do not know how many integers you would like to store. So in that case, we go ahead with dynamic memory allocation, saying malloc of 40 integer 40 bytes memory, then 10 integer store करके memory allocate करो. But when you do that, that memory is allocated on the heap. Heap, since you allocate memory as a developer, it is your responsibility to deallocate the memory. If you allocate and you forget to deallocate, your system is going to crash. Your system is going to crash. When you allocate and you forget to deallocate, in that case, your system is going to crash. So let's write some instructions to understand what can go wrong while you're writing a program in C or C++. I could use either of the syntax. काम तो वही है. Let's say we use C syntax, C++ syntax to allocate memory. And let's see what can go wrong. Rather, modern CPP provides you something called as smart pointers that can, to a larger extent, take care of this particular problem. But traditional C++ doesn't address to this particular problem. In modern CPP also, this problem can persist if you do not code it properly. In Java, you don't have to worry. However poor programmer you may be, Java will say, I'll take care of it. You don't bother about cleaning up the memory. You just want to make a request whenever you need a memory. आप request करते रहो, you will get that memory. Don't bother about deallocating that memory. That is what Java will do. Let's take a small code snippet to understand what happens and how and where the memory is actually being allocated. Assume you have some type. You have created a type, a record. For those who do not know types, a record, student record. And in student record, you'd like to store the student name, the address, and the phone number and no. So that object is quite big. A lot of information of the student has to be kept. So let's assume that we are working in a scenario where, here we go. So this is our screen, and I'll just increase. Somewhere you have this type called as structure student, and let's forget as to what it has. It's a quite a big structure. ये student का record है, काफी बड़ा सा student का record है. That's a big structure student record. In that case, we have name, address, phone number, सब कुछ है student का. Say 100 byte का record है. It takes 100 bytes. Assume. And then inside some function, say you are in function main. So while you are in function main, you may have created a variable. तो अगर आप function main में हो और आपने कहा student s, अब ये वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, कहाँ क्रिएट किया? फंक्शन मेन में क्रिएट किया है. You do not have to actually worry about allocating memory for it. Neither you have to worry about deallocating memory for it. Allocation of memory for this and deallocation of its memory will be taken care of by the system itself. या फिर कुछ ऐसा करते हैं. ये statement I write somewhere else. Here I write a function saying do it. नाम का ऐसा कोई तो एक आपका फंक्शन है, उसे आपने कॉल किया. Okay, and in every language we do it almost the same fashion. तो आपने कहा void do it नाम का आपका एक फंक्शन है, एक फंक्शन. तो when you said void do it, आप यहाँ आ गए. यहाँ आने पर आपने एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया. तो moment you create this particular variable, this has been created inside this function do it. ध्यान से देखो. तो हर एक जो फंक्शन है अपने प्रोग्राम में, this function, every function that is there in your program is given some working memory area, and that working memory area is allocated on something called as stack. So we call it as stack. So let me just take some working memory area और assume करते हैं आपने अभी जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उस प्रोग्राम के लिए कोई वर्किंग मेमोरी एरिया है. दिस इज द वर्किंग मेमोरी एरिया फॉर फंक्शन मेन. ऐसा assume करते हैं ये फंक्शन मेन के लिए
ये allocate किया गया था space. Now from main you call do it. The moment you call do it function, तो do it function के लिए भी कोई एक area allocate कर दिया गया है. तो ये है ऊपर वाला working memory area for function called as do it. ये do it के लिए जो memory area हमने allocate किया वो area है. Okay, that's a working memory area for do it. So we have two different functions. एक है main और एक है do it. ध्यान से सुनो मेरी बात. ये जो टोटल जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ, what is this? This is nothing but a stack frame. So I'll call this as जो आपका do it फंक्शन है उसका ये stack frame है. ये स्टैक फ्रेम ऑफ फंक्शन डू इट है. जैसा ये स्टैक फ्रेम फॉर फंक्शन डू इट है वैसे यहाँ आपका ये स्टैक फ्रेम है. कोई टर्म्स समझ में नहीं आते तो पूछो हाँ इमीडिएटली. आस्क मी. डोंट वरी अबाउट अरे बाकी को मालूम मुझे नहीं मालूम. डोंट वरी अबाउट दैट. If any term that I'm using, if you find it confusing, just quickly ask me. I'll give a short explanation about that. So when the program starts or when the function is called, तो हर एक फंक्शन के लिए एक वर्किंग एरिया रहेगा. तो ये जो नीचे एरिया है दैट्स अ वर्किंग एरिया फॉर मेन. ये जो ऊपर है दैट्स अ वर्किंग एरिया फॉर फंक्शन डू इट. व्हाट इज दिस एरिया? वेयर इज इट अलोकेटेड? इट्स अलोकेटेड द स्टैक. तो ये स्टैक पे ऐसे ऐसे अलग अलग फ्रेम्स अलोकेट हो जाएंगे वर्किंग एरिया. इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शन ऑन लाइन नंबर 8 आई हैव क्रिएटेड वेरिएबल कॉल्ड एज स्टूडेंट. तो ये स्टूडेंट वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट करना है. तो इट विल अलोकेट मेमोरी फॉर दिस स्टूडेंट समवेयर ऑन द स्टैक. ये समझो स्टूडेंट है 100 बाइट का एक ऑब्जेक्ट है. ये यहाँ कहीं तो क्रिएट हो गया. It has allocated memory. This object has got successfully got created somewhere on that particular frame. This frame पे ये object somewhere has got created. That's your object S. Listen very carefully. Now इस function में there may be number of instructions. इस function में there may be number of instructions. ये सारे खत्म हो गए. Moment you come out of this particular function, whatever memory that you had allocated over here, यहाँ जो कुछ भी आपने allocate किया था सब कुछ destroy हो जाएगा. Everything will get destroyed. कब? जब आप इस function में से रिटर्न करके मेन में दोबारा आ जाएगा. दैट मींस व्हेन दिस फंक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, व्हेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन ये आपका जो डू इट है, व्हेन दैट डू इट फंक्शन कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन दैट स्टैक फ्रेम इज डिस्ट्रॉयड. और उस स्टैक फ्रेम में जो कुछ भी था एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड. दैट मींस these are local variables which are created, variable that has been created inside a function, they will get destroyed moment that frame is destroyed. So very happy, you don't have to bother. आपने एक क्रिएट किया और फंक्शन खत्म होने पर इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग डिस्ट्रॉयड. सो यू डोंट रियली हैव टू बॉदर मच अबाउट इट. यू डोंट हैव टू बॉदर मच अबाउट इट. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट हैपन ऑलवेज. ऑलवेज मतलब व्हाट? नॉट फॉर एवरी एस्पेक्ट. सी व्हाट मे हैपन हियर. वी हैड दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल. लाइकवाइज मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल भी था. सपोज int सम वेरिएबल x या x ऐसा कुछ तो वेरिएबल था किसी भी चीज के लिए. अरे उसके लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. दैट इज आल्सो एलोकेटेड. So you don't really have to bother about this integer variable, this small block of memory or this large block of memory. You don't have to bother. Why am I saying you don't have to bother? Because all these will get destroyed when the function gets over. In the same fashion, suppose in this function we had a pointer. Pointers are special types of variables which can hold addresses. So if I say int की जगह if I say student star sptr, it's just a pointer variable. ये pointer है. Pointer is like references that we learn in Java. तो आपके ऐसे एक pointer है. Suppose this is a pointer variable. So this pointer is stored somewhere in the memory. ये भी stack पे है. आपको इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. Because when this program gets over, this will also get destroyed. ये automatically destroy हो जाएगा. So you don't have to worry. So we have this something called as sptr. That's a pointer that has been created. You don't have to bother about it because it will get destroyed when the program gets over. Why is it saying so? Because all of these are present on the stack frame. तो whatever is present in the stack frame that will get destroyed when the function gets over. यानी जब आप इसमें से बाहर आओगे. Note ये जो ऑब्जेक्ट है s वो स्टैक पे है. ये आपका x था. ये जो ऑब्जेक्ट है x इंटीजर था. ये स्टूडेंट था. ये सारे आपके स्टैक पे है. So memory is allocated to the stack for all these things. sptr भी स्टैक पे है, sp स्टैक पे है, xp स्टैक पे है. All these are stored on the stack. Anything which is stored on the stack, you are not really bothered about it in any language. That will automatically get destroyed when the function gets over. But suppose for some reason you thought you want to allocate
10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, और आपको पता नहीं कितने स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने हैं आपको, तो यू हैव रिटन सम फंक्शन ताकि यूजर बताए आपको कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आपको स्टोर करने हैं। तो ऐसे सपोज ऐसे इंट रेक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, रिकॉर्ड काउंट इज इक्वल टू, मेरे पास कोई और फंक्शन है गेट रिकॉर्ड काउंट, कि आपने एक फंक्शन है गेट रिकॉर्ड काउंट, आपको बताएगा कितने रिकॉर्ड चाहिए क्या। अब ये रेक काउंट वेरिएबल भी यहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ये गेट रिकॉर्ड काउंट वेरिएबल आल्सो कम हो गया, ये इंटीजर का वेरिएबल है, इसका नाम है गेट रिकॉर्ड काउंट, नहीं रेक काउंट, ये आपका वेरिएबल है कॉल्ड एज रेक काउंट। That's a variable called as rec count. So we have created this variable called as rec count. We have a variable called as ptr. ऐसे वेरिएबल्स आपके पास है, ये आपका वेरिएबल है, ये भी स्टैक पे है। फंक्शन से बाहर जाओगे तो वो गेट डिस्ट्रॉयड। समझो ना, यूजर सेज आपको है ना 10 रिकॉर्ड चाहिए थे या 5 रिकॉर्ड चाहिए थे, यूजर सेज आपको 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो इसमें आ गया वैल्यू 5, आपके लिए 5 रिकॉर्ड चाहिए ना, 5 रिकॉर्ड चाहिए, यानी समझो हमने अज्यूम किया था एक स्ट्रक्चर वाज 100 बाइट्स, तो आपको 100 के मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी 500 बाइट्स मेमोरी चाहिए। तो आप ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसको एलोकेट कर सकते हो। कैसे एलोकेट कर सकते हो? यू कैन टेक कंट्रोल एंड एलोकेट मेमोरी फॉर इट। यू कैन से, ये जो आपका पॉइंटर है str इज इक्वल टू, मैं कह सकता न्यू स्टूडेंट ऑफ 5 या रेक काउंट। Now, moment I say new student of rec count, this operator new will allocate and create an array, a group of 5 records of type student, यानी स्टूडेंट के लिए जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी वो allocate करेगा। कहाँ allocate करेगा? Not over here. This will now be allocated on a special memory area called as heap. तो जैसे stack है वैसे आपके पास एक heap है। So while this was stack, this is heap. Heap is a working memory area, but then हीप को मैनेज करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है एज ए डेवलपर। सिस्टम विल नॉट मैनेज दिस हीप, इट इज योर एंड माय रिस्पांसिबिलिटी। एनी मेमोरी एरिया दैट वी आर गोना allocate, that will always be allocated on the heap, and any memory that is managed by the system will be managed by the system, will be stored on the stack. तो ये आपका हीप है। now when I say new student rec, समझो स्टूडेंट रेक हर रिकॉर्ड 5, 10, 100 बाइट्स का था, तो ऐसे 500 रिकॉर्ड बाइट्स चाहिए आपको। ये 500 बाइट की मेमोरी will now be allocated on the heap. ये somewhere on the heap this 500 bytes of memory will be allocated. कहीं तो ये 500 बाइट की मेमोरी allocate हो जाएगा। somewhere this large block of memory is now being allocated. ये 500 बाइट की मेमोरी is allocated somewhere. assume करिए 500 बाइट की मेमोरी है, बट ये मेमोरी है तो इसका कोई एड्रेस रहेगा, it will be stored at some location, तो इसका कोई एड्रेस रहेगा। suppose this memory was stored at address OXFFFF, that's the location where this memory was allocated. now इस मेमोरी का एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा, तो ये पॉइंटर में अभी आएगा OXFF, सॉरी 0xFFFF. That means this pointer is now pointing to this block of memory. ये जो आपका पॉइंटर है ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, यानी इसे पता है ये मेमोरी कहाँ है। एंड नाउ लुक एट दिस, सपोज ऐसा हो जाता है, इसके बाद आप प्रोग्राम एक डेटा यूज करते हो जिस काम के लिए यूज करना है ये वाला, एंड यू फिनिश, यू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। नाउ मोमेंट यू कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, ये जो आपका जो स्टैक था ना, दिस विल ऑल गेट डिस्ट्रॉयड, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। This all will get destroyed. ये पूरा का पूरा एरिया will get destroyed. ये पूरा का पूरा एरिया will get destroyed. But then ये जो आपका हीप पे पड़ा हुआ है वो वैसे रह जाएगा। Now some other function allocates memory, अब वो ये एरिया यूज नहीं कर सकता है because ये मेमोरी लीक हो चुका है। It was allocated for some purpose, but after you have finished utilizing it, you fail to release that memory. तो आप अपना हीप समझिएगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीप समझो 1000 बाइट्स था, उसमें से आपने 500 बाइट्स यूज किए, अभी आपके पास 500 ही बचे हैं। That means this area जो आप रिलीज नहीं किए, that no longer can be used for any other purpose, because आपने इसे allocate तो कर लिया है, but अभी आप इसे deallocate नहीं कर पाएंगे because इसका एड्रेस आपके पास है ही नहीं, you fail to deallocate it. So as a good programmer, what you should have done is, even before that function gets over, ये function खत्म होने के पहले आपको क्या करना चाहिए था? This pointer was pointing to this location. Suppose ये जो ब्लॉक है इसका काम आपको नहीं है अभी, you are finished with its work, need, and after few instructions you no longer need that particular block of memory. So you should have said delete sptr, okay, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताने के लिए जो एरे है जिसके अंदर इतने रिकॉर्ड्स है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ऐसा कुछ आपको कहना होगा कि ये इतने रिकॉर्ड्स को आप डिलीट कर दो।
Now, moment you say delete, what would happen is this pointer which is pointing to this area will now be released. That means this area can now be reutilized for some other memory allocation. Now this is not reserved for any purpose. When you said on line number 12 new student rec, then आपने कहा इसे रिजर्व करो, 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए इसे रिजर्व करो. बट जब आप डिलीट कहते हो, that time this area is released, so this area can now be used for any other purpose. ये जो एरिया है ये हमने रिलीज कर दिया. कैसे रिलीज कर लिया? By saying delete. The moment you say delete, this area is gone. So now the entire heap is again available for you for further allocation. So if you fail to release the memory, it remains as a garbage, and that area cannot be utilized by any other purpose. That's called as memory leak. यानी अगर आप इसको रिलीज करना भूल गए तो हम कहते हैं ये मेमोरी लीक हो गया है. Have you understood this particular concept first before I go ahead? Quick feedback. सर गार्बेज हीप मध्ये असतो का? असं काय नाही, गार्बेज कुठेही असू शकतो. मेमरी अलोकेट केली आणि त्याला रिलीज नाही केलं त्याला आपण गार्बेज म्हणतोय, कारण का तो वापरू पण शकत नाही आपण तो एरिया. वी कॅनॉट यूज दॅट एरिया. यू डू नॉट हैव एन एक्सेस, यू डोंट इवन हैव इट्स रेफरेंस, उसका एड्रेस आपके पास नहीं है, यू कैनॉट यूज इट and neither can you clear it, because to clear it you need to know where the memory is allocated. So that memory is as good as lost. So we call it as garbage. सर म्हणजे जेव्हा आपण प्रोग्राम मध्ये रिलीज नाही केली मग ती तेव्हाच रिलीज होईल ना जेव्हा आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होऊन कम्प्लिटली एक्झिक्यूट होईल किंवा एंड होईल. प्रोग्राम खत्म होतो, but there are programs which runs 24/7. So it's a false thing to think about कि प्रोग्राम ना मैंने रन किया तो खत्म होता है. बैंकिंग प्रोग्राम्स runs 24/7 for months at a time. अब सोचिए उसमें एक बाइट भी आपने अगर रिलीज करना भूल गए गलती से, तो एक एक बाइट दिन भर में कितनी बार वो एप्लीकेशन यूज किया जाएगा. टाइम विल कम, वो एक एक बाइट मिला के भी पूरा सिस्टम का हीप कंप्लीट फुल हो जाए, एंड फॉर सम अदर फंक्शन वेयर इट रिक्वायर्स मेमोरी एलोकेशन उसके अवेलेबल नाउ एंड द एंटायर सिस्टम में क्रैश. सर तुम्ही स्टॅक मध्ये बोलले की ऑटोमॅटिक ते डिस्ट्रॉय होतं. करेक्ट. मग तिथं कसं काय गार्बेज कलेक्ट होतं? तिथं कसं काय? तिथं कसं काय गार्बेज व्हॅल्यू कलेक्ट होऊ शकते? व्हॅल्यूची गोष्ट नाही करते आपण, मेमरी एरियाची गोष्ट करते. वैल्यू नहीं, वैल्यू गार्बेज मीन्स यू डू नॉट नो व्हाट द वैल्यू इज, उसे आप गार्बेज कह रहे हो. यहाँ मैं कह रहा हूँ देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट यू कैनॉट डू नॉट नीड एनीमोर. यू हैव फिनिश यूटिलाइजिंग दोस 500 रिकॉर्ड्स. 500 बाइट्स का रिकॉर्ड आपको यूज की जरूरत नहीं है, उसे मैं गार्बेज कह रहा हूँ. गार्बेज इज समथिंग दैट आई डू नॉट नीड. और आप जो कह रहे हैं वो कह रहे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, वो गार्बेज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गार्बेज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज अलोकेटेड व्हिच वी कैनॉट यूटिलाइज. वैल्यू क्या है और मेमोरी अलोकेट और डीअलोकेशन ये दो अलग मैटर है. When I said stack takes care of memory allocation and deallocation, that means creation of variables and destruction of variables will be taken care of by the system automatically. I'm not talking about what is the value that is stored inside the variable. Yes. Any other question? Sir, when does stack removes its memory? When the after the function gets function over. is over. When the function, moment the function is over. Okay. So एक और एक नोट करके रखिए, आगे इसकी बात करेंगे हम लोग. फंक्शन कॉलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर. कि जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे मेमोरीज टू एलोकेटेड फंक्शन के लिए, उसके अंदर वो वेरिएबल्स आर टू बी क्रिएटेड, एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द फंक्शन दैट एंटायर मेमोरी इज टू बी डिस्ट्रॉयड. सो फंक्शन कॉलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर. लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, मैं फंक्शन को कॉल करूंगा कितनी बार भी. अरे इट्स अ कॉस्टली अफेयर बिकॉज ऑल दिस ऑपरेशंस हैव टू बी डन, क्रिएशन ऑफ वेरिएबल्स, डिस्ट्रॉइंग ऑफ वेरिएबल्स, सिस्टम विल डू इट ऑटोमॅटिकली फॉर यू. सर पण जावा मध्ये कॉस्टली का C++ मध्ये? कुठेही जावं आयुष्यात कॉस्टलीच आहे, कारण सगळीकडे मेमरी अलोकेट करावंच लागेल, रिलीज करावंच लागेल सिस्टमला. हाँ, उसका कॉस्ट कितना ज्यादा है दैट्स ए डिफरेंट इशू, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर टू लोड अ फंक्शन. जो सिर्फ फंक्शन कॉल करने से कंट्रोल बाहर जाता है ऐसा नहीं है, जो हम लोग कहते हैं वैसा नहीं है. फंक्शन कॉल करने पर स्टैक पे उसके लिए मेमोरी अलोकेट करना है. फंक्शन खत्म होने पर स्टैक की मेमोरी डिस्ट्रॉय करना है. उसके पहले उसके अंदर जो डेटा है उनको डिस्ट्रॉय करना है. देयर इज लॉट थिंग्स टू बी डन. रिकर्शन यूज नाही करत ना जास्त. Pardon? म्हणूनच आपण रिकर्शन जास्त यूज नाही करत. That's a different aspect. I'll talk about it later. But then it's a costly affair. अभी जो डिस्कस किया उसके बारे में कोई कंसर्न है क्या? एनीबॉडी? बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या बात की अभी? टिक या क्रॉस? नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछो, बिकॉज आज का टॉपिक ही उसी के बारे में. तो प्रॉब्लम समझ में आएगा तो जावा का सोल्यूशन कैसे समझ में आएगा. तो लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड. इफ यू आर नॉट टिकिंग देन यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन. और आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आपको टिक करना है. आइदर वे ऐसा नहीं चलेगा. यू जस्ट कीप बी देयर ऑब्जर्विंग. शंतनु एंड निखिल गाडेकर. Yes, sir. अरे टिक करो ना, फिर मुझे कैसे पता चलेगा. Yes, sir. Wait. ओके
Now that we have understood what this is all about, problem kya hai? Now, how do you take care of problem? You don't have to worry as a Java developer about this problem. As a C developer, you have to worry. As a C++ developer, you have to worry. Java does automatic memory management. Means what? Java says, आपको memory चाहिए, आप new era कह रहे हैं, कहते जाओ. आपको delete कहने की जरूरत नहीं है. Java will keep a track. Do you really need that particular block of memory? But how does the Java know that this memory is no longer required? And why does C or C++ does not know this memory is no longer required? Java is smart. Let's understand how does Java do this memory management. The name garbage implies that objects no longer needed by the program are garbage and can be thrown away. It's a garbage we no longer require, so we can just throw it away. Java virtual machines heap store all objects created by running Java application. Now that's a problem. That means in Java, every object that you create, even if I say student S, that will not lie on the stack. In Java, every object will go on the heap. It has its own advantage, disadvantage. Point kya hai? Every object that we create in Java, every variable of any class type that we create in Java will not go onto the stack. It will go onto the heap. Except for primitive variables like integers, characters, floats, they will come on the stack. But a student, teacher, book, client, ऐसे कोई भी object रहेंगे, real-time objects that we create, they will all go onto the heap. So in Java, there is no way you can store the objects on the stack. They will always land up on the heap. C में, C++ में you can store on the stack or the heap. New करके allocate किया तो heap पे, और student S कहा तो stack पे. Java में that's not the case. Java में every object, you like it, you don't like it, will go onto the heap. You don't have any control. You cannot say अभी ये object stack में आ जाना चाहिए, ये नहीं कह सकते. अभी यही problem समझ में आना चाहिए आपको. Stack was managed by the system automatically. तो stack तो clear हो जाएगा, but यहाँ हर एक object heap पे जा रहा है. Now the question is, if every object goes on the heap, how it will get cleared? So that's what we need to understand. Ankur, क्या doubt है? Sir, if we have a stack that is system, so why we have heap? Okay, stack we is of a limited size, and stack पे जो भी memory allocate करना है, ये आपको compile time बताना होगा. That means while you are writing the program, that time you have to identify how many variables you need. अब जब मैंने वो do it function लिखा था, just have a look at this do it function once again. इस do it function में I was explicit about मुझे क्या चाहिए. मुझे मैंने कहा मुझे एक स्टूडेंट वेरिएबल चाहिए, मुझे एक इंटीजर चाहिए, मुझे एक पॉइंटर चाहिए, इंट रिकॉर्ड चाहिए. ये एक्सप्लिसिटली बताया मैंने क्या क्या चाहिए. Yes, sir. ओके, सो द सिस्टम कैन कैलकुलेट इसके लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है, इसके लिए कितनी है, इसके लिए कितनी है, इसके. तो सिस्टम कैन कैलकुलेट द मेमोरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस. लाइन नंबर 8 से लेकर 11 तक हर एक वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत है, इट कैन कैलकुलेट. जरा मुझे बताइए, ये जो फंक्शन है, ये प्रोग्राम रन करते समय रन होगा या कंपाइल करने पर रन होगा? रन करते हैं. तो ये रिकॉर्ड काउंट में यूजर 10 डालेगा या 15 डालेगा या 500 रिकॉर्ड कहेगा? क्या आपको जिस दिन कोड लिखा था पता है क्या? No, sir. क्या कंपाइलर को गेस कर पाएगा? कंपाइलर यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, इस वेरिएबल की यहाँ वैल्यू क्या है, लाइन नंबर 12 पे इसकी वैल्यू क्या है? विल द कंपाइलर बी इन पोजीशन टू गेस? No. So if the compiler does not have information as to how much memory you require at compile time, this decision as to how much memory is to allocated will be kept pending till the time the program does not run. So while you are running the program, then you know how much memory is to allocated, but compiling तो run करने के पहले हो चुका है ना. Yes, sir. So now at runtime अगर आपको memory allocate करना है, यानी all memories are allocated at runtime, but अगर उसका decision आपको runtime लेना है कितनी memory allocate करना है, then compiler cannot help you. Compiler can help you to allocate memory at runtime if you have told the compiler at compile time कि मुझे कितनी memory चाहिए. So it makes provision in your program. So when the function is called, उतना memory allocate होगा. That planning compiler can do, provided उसे compile time पता था source code में. But now when you write a function saying get क्या कहा record count, and you're going to ask the user how many records you would like to store. कभी user 5 कहेगा, कभी 500 कहेगा. हमें प्रोग्राम लिखते समय एज ए डेवलपर हमें कैसे पता रहेगा कितनी मेमोरी की कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए? डू यू नो दैट? किसी का मन पढ़ पाओगे? No, sir. So when the decision about how much memory is to allocated, if the decision is going to taken at runtime, you don't have choice but to allocate memory on the heap, because heap gives you an opportunity to allocate memory at runtime. Stack doesn't give you such opportunity. Yes, sir. Okay. Any other question, anybody? Okay. So since there are no questions, let's proceed with our discussion. Java virtual machine stores, machines heap stores all objects created by running Java application. So in Java, whatever objects are created, all of them will always go on the heap
You like it, you do not like it. JVM specification does not require any particular garbage collection technique. Okay, what does it mean? If you read the specification carefully, I told you JVMS. If you read the specification carefully, there is no mention about heap garbage collector होना चाहिए क्या? ऐसा कोई mention नहीं है. Garbage collection की technique ही हो, इसकी जरूरत नहीं है. Okay, as per the specification goes. But today, any JVM implementation that you see across the globe will always have garbage collected heap. There is very little chance that you may come across any Java implementation जिसमें heap garbage collected नहीं है. But specification is not mandating this. Specification doesn't say heap should be garbage collected. But almost every JVM that is there across the globe has garbage collection implemented it. But ऐसा मत कहिएगा इसमें garbage collection नहीं है इसलिए it's not a standard JVM. It's a standard JVM because JVM doesn't specify anywhere that the heap should be garbage collected. But it has now become almost a standard that every JVM is garbage collected. C++ allows dynamic memory allocation. Dynamic means we can allocate memory as and when required. जब चाहिए allocate करेंगे, जब चाहिए नहीं चाहिए deallocate करेंगे. But that in that case, programmer is responsible for deallocation memory. It is the duty of the programmer to make sure the blocks of memory that he no longer requires, he releases them by calling delete function. And if he forgets to release it, it results into memory leak. अब ये memory leak क्या है? Programs that do not deallocate memory that is no longer required is bound to crash when no memory is left on the system for allocation. That means in the last case, जैसे हमने memory allocate किया था, we had allocated that memory and you forget to say delete and you come out of that function. Moment you come out of that function, all the variables, the pointers, everything will get destroyed. But जो heap पे allocated था, वो तो वैसे रह जाएगा. And you no longer have a reference to that address so that later you will go ahead there and release that. That's not possible. That will remain on the heap forever as long as the program is running. And आप ऐसा समझिएगा आपके total heap में से उतनी memory less हो चुकी है because there is no way now you can clear that memory. Memory leak. You allocated memory for some purpose and you are not utilizing it for the purpose for which it has been allocated. That's a memory leak that you may come across. In Java, Java provides system level thread that tracks each memory allocation. Now, even before I go ahead with the further discussion, let me tell you about this term that I used for the first time called as threads. That's one of the most powerful features of Java. For a moment, you can assume the thread is like a process. But don't tell anybody thread is a process. They will kick you out of Java community. Yeah? Thread is not a process, but just to keep it simple, let's say it's a process. It's a system level process. System level thread, huh? but the thread is a new term for you. So I'm saying process. When I say process, you understand. That means उसमें कोई operations होते रहेंगे. Zoom का भी एक process चालू है. मेरे पीछे यहाँ browser open है, उसका भी एक process चालू है. It is something which has its own code, it has its own data. उसका खुद का instruction set रहेगा. It will be performing some operations. Process. Threads are very, very lightweight processes. Threads are very, very lightweight processes. तो assume करो thread भी कुछ नहीं process है. So JVM has this system level process, okay, which automatically keeps a track of memory allocation. यानी उसके अंदर एक process है, एक thread है. It keeps a record कि when you and where you have allocated memory. इसका record वो रख लेता है. ये system level thread है. System level means you do not have to start it, you don't have to stop it. JVM will start it, and when the JVM stops, only then it will stop. You do not have to bother about starting and stopping it. You do not have to say start with garbage collection, stop with garbage collection. You don't have to do that. This thread or process is running automatically for you throughout the lifetime of the JVM. जब तक Java program चालू है, till that time it is running, and you cannot really interfere with its functioning. It's a system level thread, not a user-defined thread. If you and me create a thread, that means we are in total control of that particular thread. But if the system creates the thread process, then system is responsible for it. We cannot control that particular thread. So two types of threads. एक system level, एक user defined thread है ऐसे. Java में there are very weird names given to it. एक को कहते हैं हम लोग daemon thread, एक को कहते हैं non daemon thread kind of thing. But forget about that. We'll say एक system level है, user defined है. हमने create किया है. This thread we did not create, but this thread is going to keep a track of the memory allocation. कहता है during idle cycles of JVM, the garbage collection thread checks and frees any memory location that can be freed. That's a very interesting and a very simplistic statement to make, and that was the case how it is. Now, during idle cycles of JVM means what? वो कह रहा है
जब आपका जेवीएम आइडल बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इन दैट केस, इन एट दैट टाइम वो उसे लग रहा है कि अपना जेवीएम अपने प्रोग्राम के अंदर के कोई इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस नहीं कर रहा है, आइडल है. इफ इट इज आइडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस गार्बेज कलेक्शन थ्रेड विल किक इनटू एक्शन, चालू हो जाएगा. और वो क्या करेगा, इट विल लाइक अ गुड सर्वेंट, इट विल गो इनटू दैट हीप एंड चेक यहाँ कोई गार्बेज पड़ा है क्या, कोई गार्बेज पड़ा है क्या. इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, it does it intelligently. इसका लॉजिक बताता हूँ. If it identifies there is some object which is no longer required, it will start clearing those objects one after another. सारे को हटाएगा, आपका heap clear करके रख देगा आपके लिए. But when does it do it? During idle cycles of JVM. अब मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है क्या प्रोग्राम रन करते समय बीच में ब्रेक लेके आराम करता है, आइडल है, the program is not running in between? Does it ever happen? नो सर. It happens. जरा सोचो जरा. Anybody? It's a common sense. Is it a sleep time? It can be sleep time, that's one thing. But when it sleeps, everybody sleeps. तो जब sleep हो जाएगा ना, तो कोई काम नहीं करेगा, garbage collection भी काम नहीं करेगा. That's one thing when the program is idle, sleeping. But sleeping is so dangerous. सारे लोग sleep कर जाते हैं, तो कोई काम नहीं करेगा. Then anything else? That's also one time when the program is idle. हाँ? Sleep कर रहा है तो idle है. Then कंपाइल कर. कंपाइल टाइम तो प्रोग्राम की मतलब ही नहीं है. फॉर अस प्रोग्राम इज ऑफ सम यूज व्हेन इट इज रनिंग, तो हम रन टाइम की बात कर रहे हैं. कंपाइल टाइम प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो स्लीप का सस्पेंड होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है. वन वाज स्लीप. जस्ट टू ऐड टू दैट, एक मिनट, जस्ट टू ऐड टू दैट स्लीप, वी कैन मेक इट स्लीप. हम चाहे जब भी चाहे उसे स्लीप करवा सकते हैं और कह सकते हैं वेक अप, दैट वी कैन डू. हाँ, When it takes or waits for some kind of input. very correct. That's called as IO blocking. That's one very good, simplest and a good example of it. When it is waiting for some IO. यानी आपने एक सिस्टम से यूजर को एक मैसेज दिया, प्लीज एंटर द इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम, और 2 दिन तक यूजर ने एंटर नहीं किया नेम, तो क्या सिस्टम बोलेगा, आई वेटेड फॉर यू वेरी लॉन्ग, आपने नेम एंटर नहीं किया, नाउ लेट मी एक्सेप्ट योर एड्रेस. विल इट हैपन? विल इट गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट गिव द इनपुट फॉर द फर्स्ट वन? विल इट एवर हैपन? No, sir. No. So the program has got blocked for some input. Program has got some block for some input. It's a poor programmer who writes that such a code. As a good Java developer, हम इससे बढ़िया कोड लिखेंगे. वो बोलेगा 5 मिनट के बाद, I waited enough, I'll stop now. ऐसा कोड हम लोग लिख सकते हैं. But normally जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, we write, please enter the your roll number. User did not give the roll number. The program is stuck at that time because it cannot go to the next statement till that time that statement doesn't get executed, till the time that IO block is not removed. So JVM में idle बैठा है, वेट कर रहा है इनपुट जब आएगा. 2 दिन के बाद आए, 2 साल के बाद आए, whenever the input comes in, it can proceed further. But now the program has got blocked. Now since the program has got blocked and it cannot make any progress, since the program has got blocked and cannot make any progress, JVM is idle. तो JVM क्या सोचता है, फिर इतने टाइम को मैं यूटिलाइज कर लूँ. What way will I utilize? I'll now do some garbage collection. जाके चेक करते तब तक गार्बेज में, जब तक इनपुट नहीं दे रहा है. So that can be an example of an idle cycle of JVM. So during idle cycles of JVM, the garbage collection thread checks and frees. याद रखो 2 स्टेजेस होता है. एक स्टेज है चेकिंग का और दूसरा स्टेज है फ्रीइंग का. तो पहले चेक करेगा और फिर बाद में जाके फ्री करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर 2 स्टेजेस, चेक एंड फ्री. ये 2 अलग स्टेज है. ऐसा भी हो सकता है उसने चेक किया, ऐसा हो सकता है उसने चेक किया और आपने इनपुट दे दिया. फ्री करने के पहले वो वापस JVM कम्स इनटू एक्शन और फ्री करना रह जा सकता है. बाद में जब फ्री टाइम मिलेगा तब जाके वो फ्री करेगा. दैट कैन आल्सो हैपन. There are very risky matters that can come across. Java, in Java, garbage collection happens automatically during the lifetime of the program. During the lifetime of the program, अरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद गार्बेज की चिंता करने की जरूरत नहीं. All the memory allocated for the program is going to get released. वो C हो या C+ हो या Java हो. The point is there are programs which run 24/7. Now when the program is going to run 24/7, you are very rarely going to bring down that particular application which is running. नीलोफर, आप ऐसे कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं क्या जो सालों चलता है या महीनों चलता है? There are few scripts which are running in cron tab, Okay, and do you have an which will opportunity? give the output Huh? after 10 to 15 minutes. But do you have an opportunity to shut down that system किसी वजह से? ऐसे आपको चांस होता है क्या? चाहे तो उसे जब भी चाहे क्लोज कर दे वो प्रोसेस? Yes. आपको होता है. But then you must have also seen in your workplace there will be system where even the boss doesn't have a liberty to bring down that system. ऐसा हुआ है आपके कंपनी में कभी? बंद ही नहीं कर सकते 2-2 महीने, 4-4 महीने?
No, No? I didn't came across You such didn't come up. Think about it. situation. एक बैंकिंग सिस्टम है, रोज रात को बैंक बंद कर दे, चलेगा सिस्टम? 8 बजे बंद कर देते, सुबह 6 बजे चालू करेंगे बैंकिंग ऑपरेशन आजकल? No. नो, दे विल हैव टू रन 24/7. हाँ, ये अभी 31 मार्च 2-3 दिन उनको जिंदगी में मिलते हैं जरा वो सिस्टम ट्रांजैक्शन बंद करने के, बट अदरवाइज पीपल नाउअडेज तो 31st में भी दे विल बी डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. सो दिस बैंक्स ऑपरेशंस या कोई मिलिट्री का सिस्टम है. नाउ पाकिस्तान इंडिया आर हैविंग टेंशंस, बट देन पिछले 4 सालों से एक भी मिसाइल पाकिस्तान ने नहीं डाला है, तो अभी 2-4 दिन सिस्टम बंद कर लेते, जरा ओवरहॉलिंग कर लेते. Does the military have that liberty to bring down that system? No. No, they will have to run that system 24/7. तो हम लोग बात करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं होती है कि सिस्टम को बंद करें. Some simple applications that you use on a mobile phone उसके सर्वर पे they cannot bring it down. Why? Because to restart the system is also a complex affair. It will take long time to redeploy that system. ऐसा भी दिक्कत होती है. Large systems को सेटअप करना भी बहुत मुश्किल होता है. So just to restart आपके लिए बहुत आसान होता है. ./exe रन कर लिया, हो गया. But in real world applications, you want to restart that application, that may be quite a time consuming affair. You may not have that particular opportunity to restart, or restarting may be loading that system may be a very time consuming affair. अगर ऐसा है, the system is running 24/7. So in that case, Java में जो ये 24/7 system run कर रहा है, and if you as a programmer fail to deallocate memory, Java says you don't bother, you don't even take the responsibility of deallocating memory. Java says I will do it. That means you don't have to even talk about deallocating. Java says I will do that deallocation. You just tell me whenever you need a memory. So it avoids memory leaks and need for memory deallocation. So you do not have to, as a programmer, even think about memory allocation, deallocation. Garbage collection schemes across various JVM implementation. Means last time ने कहा था JV is a machine created by specification. And समझो रोहित एंड प्रणव ने मशीन बना के दिया था, बट दोज मशीन्स वर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, बट इंटरनल थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट हार्डवेयर दे यूज. स्पेसिफिकेशन वही 1 TB का हार्ड डिस्क, दोनों मुझे 1 TB का हार्ड डिस्क दे रहे हैं, एक सीगेट का दे रहा है, एक तोशिबा का दे रहा है, 1 TB है, तो इंप्लीमेंटेशन कैन वैरी. सो Oracle JVM may have a different idea of garbage collection, Intel JVM may have a different idea of garbage collection, Microsoft JVM, Red Hat JVM, IBM JVM, all of them सबका जावा है. जावा में वो जावा का JVM बना के देते हैं हमें. They may have implemented this idea in different way. In fact, Oracle JVM that you and me will be using, which is based on OpenJDK, it itself has more than 5-6 techniques of garbage collection. Early days, when we started learning Java, there used to be one very simple technique of garbage collection. But today, the requirements are so complex कि एक logic से कुछ काम नहीं बनता है. So there are several techniques which are used for garbage collection. And JVM doesn't say कौन सा टेक्निक यूज करना है, because garbage collection की जरूरत ही नहीं है JVM के लिए. JVM कहता है garbage collection हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Now, what are the advantage of the system taking over the responsibility of garbage collection? So you are more productive. You do not have to keep a track. कहाँ मैंने वो एक बाइट allocate किया है जिसको मुझे रिलीज करना है, and how do I keep a track of that block of memory? You no longer are responsible for it. Java does it automatically. So you can focus more on your business logic and do not have to bother about this elusive memory problem. यानी कहाँ 1-2 बाइट छूट गए गलती से, उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है. Garbage collection is that it helps ensure program integrity. So program integrity will never be disturbed. Program will be safe and will work perfectly. Java programmers are unable to accidentally or purposely crash JVM by incorrectly freeing the memory. ये क्या है incorrectly freeing the memory? As a C++ programmer या as a C programmer, do one thing and see. जो मेमोरी आपने डिलीट किया है उसे दोबारा डिलीट करो. If you release a memory which is already released, even by mistake, you will crash the entire system. Big functions when you write, you don't even remember ऊपर मैंने रिलीज किया है क्या, and with that particular burden you again release, and mistakenly अगर आपने उसे ऊपर रिलीज कर लिया है, gone. So releasing a memory which is already released may also create a problem in C++. So गलती से रिलीज हो गया, गलती से डबल टाइम रिलीज हो गया, such things will never happen in Java. Java says you are not responsible for releasing the memory. You only tell me whenever you need a memory. I'll take the responsibility of releasing the memory. So, and Java is intelligent enough to understand whether that garbage, that object is required or not required. Disadvantage क्या है? Disadvantage इसका ये है, एक potential disadvantage है. जरूरी नहीं क्या disadvantage हो. There is an overhead that can affect programs. Means ऐसा सोचिए, एक प्रोग्राम आपने लिखा है,
in that program, you haven't done too much of memory allocation. Haven't done too much of memory allocation. You have enough of it. Let's say you have 1 lakh bytes का heap है, ज़्यादा ही होता है इसे, but 1 lakh bytes का heap है. और आपने जो भी allocation किया है, that counts totals to about 10% of it, 10,000. अब मुझे बताइए, are you gonna fall short of memory जब आपको 1 लाख में से 10,000 bytes यूज करने हैं तो? Are you gonna fall short of memory? Yes or no? Yes, sir. हाँ, 1 No, लाख sir. बाइट से उसमें से 10,000 बाइट्स यूज कर रहे हो तो क्या you will fall short of memory for any other purpose? No. You will not fall short of memory, correct? But JVM को थोड़ी ना पता है आपको कितनी मेमोरी के आगे जाके फ्यूचर में जरूरत है. तो whenever the JVM is idle, it will start checking, and every time it checks, it realizes there is no garbage. It can also happen. दूसरा एक आइडिया है JVM implementation का. It may not run during idle cycles of JVM. After periodic interval, it starts. यानी every after a few milliseconds, JVM starts. ऐसा भी हो सकता है. तो JVM may start after periodic interval. यानी समझो अप्पू के JVM में it starts during idle cycle, and गौरव के JVM starts after every 5 seconds, after every 10 seconds. तो गौरव का JVM अगर every after 10 seconds जाके देखता है heap में कि वहां कोई garbage है क्या, and every time it realizes there is no garbage, hasn't it really wasted the time that could have otherwise been used to run the program that was utilized by that garbage collection thread to check whether there is a garbage, and when it realizes there is no much garbage, और है भी तो बहुत कम है, और उसे रिलीज करने के भी कोई ज्यादा फायदा नहीं था, because anyway you are not going to fall short of memory. That's a potential disadvantage. That means you may invest time that could have otherwise been utilized to run the program that could be invested in checking for garbage. So there is a potential disadvantage where you may lose on the memory, on the time. So that's potential disadvantage. जरूरी क्यों होई ऐसे? Programmers in garbage collection environment have less control over CPU scheduling, that means time scheduling, devoted to freeing objects that are no longer required. That means you cannot give an instruction to the JVM ka processor saying, go and release the memory. Neither can you tell it, stop, don't release the memory. Do something else. That you cannot do. You have very less control over it. In C++, you are the boss. You decide when to clear the memory. And you are responsible if you fail to clear the memory. You are the boss, but the boss, that control comes with a responsibility. You are also responsible for releasing the memory. आप allocate कर रहे हो, आप ही deallocate करो. When जब आप कहोगे तभी release किया जाएगा. So as a C programmer, as a C++ programmer, you have more responsibility. Responsibility not just to allocate, responsibility to also ensure when that thing is no longer required, we have to deallocate. So all that thing you have to keep track as a C++ programmer, but then you have more control over scheduling of CPU time. That means we can decide what will be my CPU doing at this point of time. Whether you do the garbage collection, whether you will be involved in some calculation that I want to do. In Java, you have very little or almost no control over running of this system level thread. Your JVM का जो garbage collection का thread है, वो system level thread है. That's not something that you and me can really control. Now talking about algorithms, always keep in mind it runs in 2 stages. ये दो चीजें में करेगा. यानी any garbage collection that technique that you see in Java runs in 2 stages. First stage, it detects what is a garbage, and the second stage, it will then go ahead clearing those objects from the heap which are no longer required, so the space is made available for your program. That means, put in simple words, first detect what is a garbage, and second stage, clean, clear, remove what is garbage from the heap. So it will always run in 2 phases. Identify what is the garbage and clear that garbage from the heap. Now, how does it know what is a garbage? So it says any object referred to by the root is reachable and therefore a live object. Any object referred by the one more warning I want to give. Some local textbooks say what is a garbage? Definition they do. Object that is not utilized for a very long time is a garbage. Nonsense. Very long का मतलब क्या है? 2 minute long है, 2 दिन long है, 2 साल long है. क्या पता? I have created one object and I required that object after 2 years. That program is running. So that lifetime, how long, that doesn't really matter. Garbage, we should identify not something that is not used for a very long time. But it may be used after a very long time. So a very long time concept is not the right thing to talk about when we talk about garbage collection. Garbage is something that is no longer required.
after a very long time or after a very short time also. If it is no longer required, it's a garbage. Now, how does the system identify what is a garbage? There are interesting mechanisms that it uses to find what is a garbage. There are some very advanced concepts also it utilizes. So object, any object referred to by any object referred to by the root is reachable and therefore a live object, and any object referred to by live object is also reachable. यानी ये क्या मतलब है? यानी स्टैक में से जिस ऑब्जेक्ट तक आप पहुंच सकते हो हीप में, यानी जिस किसी का एड्रेस आपके पास अवेलेबल है वो रीचेबल है. अब आप किसी के पास जाना चाहते हो, से रोहित हैज हिज ओन फ्रेंड ऑफ हिज कॉल्ड एज संजय, एंड संजय का एड्रेस इसके पास नहीं है. कैन रोहित रीच संजय इफ ही डजंट हैव हिज एड्रेस? कैन नॉट. इफ यू हैव टू रीच इट यू विल हैव टू हैव हिज एड्रेस. तो संजय का एड्रेस अगर रोहित के पास है तो फॉर रोहित संजय इज रीचेबल. करेक्ट. सोचो, सुनो. अब लिसन टू बी वेरी केयरफुल. रोहित ऑल्सो वांट्स टू विजिट गौरव. रोहित के पास गौरव का एड्रेस नहीं है. Then can Rohit reach Gaurav? Any possibility? If Rohit doesn't have address of Gaurav? No. सोचो जरा. रोहित के पास सिर्फ संजय की एड्रेस है. पर संजय के पास गौरव का एड्रेस हो सकता है. That's the thing. That means Rohit can reach to Sanjay. Rohit can reach to Sanjay and access details of Sanjay. Sanjay in turn has Gaurav's address. So गौरव का एड्रेस किसी के पास नहीं था हीप में, स्टैक में. स्टैक में हमारे पास रोहित का एड्रेस था, तो वी रीच रोहित एंड फ्रॉम रोहित वी कैन गेट गौरव एड्रेस. तो ये गौरव जो है इनडायरेक्टली रीचेबल हो गया. एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रेफर्ड टू बाय लाइव ऑब्जेक्ट. तो हमारे लिए हु वाज लाइव, संजय या गौरव? संजय. संजय, बिकॉज संजय का एड्रेस हमारे पास था. करेक्ट. बट संजय वाज रेफरिंग टू गौरव, उसके पास गौरव का एड्रेस था. यस सर. तो एनी ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू बाय लाइव ऑब्जेक्ट इज आल्सो लाइव. एड्रेस समझ में आ रहा है? We have address of Sanjay, so Sanjay is live for us. Sanjay have address of Gaurav, so Gaurav is also live. Any object referred to by live object is also live. यानी उसको गार्बेज कलेक्ट नहीं करेगा जीवन. मुझे पता है, शायद इसकी जरूरत कभी तो आपको पड़ सकती है. क्या कहता है? Any object referred to by the root is reachable and therefore live. यानी संजय हमारे लाइव है. Any object referred to by live object is also reachable. संजय के पास गौरव का एड्रेस है तो गौरव भी reachable है. यानी दोनों लाइव ऑब्जेक्ट है. Program is able to access any reachable object, so this object must remain on the heap. तो any object which is reachable should remain on the heap. जो भी object reachable है वो heap पे रहना चाहिए. Any object that is not reachable can be garbage collected because there is no way for the program to access it. यानी ऐसा कोई भी object जिसका एड्रेस आपके पास नहीं है वो garbage है, और वो garbage है तो it should be collected from the heap. Okay, so let's go back to our previous diagram that we had drawn. In this particular diagram, if you realize, if you see, अरे डायग्राम डिलीट किया क्या मैंने यहाँ से? सर पण आपल्याकडे ऍड्रेस कसा असतो, म्हणजे कुठल्या फॉर्म मध्ये, कारण पॉइंटर्स तर नाही. Who told you there are no pointers? Who told you there are no pointers? Yes. म्हणजे डायरेक्ट हाँ. पॉइंटर अरिथमेटिक्स तर नाही ना. Pardon? सर एका स्लाइड मध्ये तुम्ही सांगितलं होतं की पॉइंटर अरिथमेटिक्स नाहीये. पॉइंटर अरिथमेटिक्स नाही आहे ना. पॉइंटरची कॉन्सेप्ट नाही असं मी त्यावेळी एक अजून गोष्ट सांगितली. इन जावा वी हॅव ऑल द पॉवर ऑफ पॉइंटर्स विदाउट पॉइंटर अरिथमेटिक्स. अच्छा. ओके. यू आर लर्निंग C++ एज वेल विथ मी, करेक्ट? यस सर. तो हमारे पास C++ में रेफरेंस नहीं था कॉन्सेप्ट. यस सर. एंड रेफरेंस वाज आल्सो एनेबलिंग यू टू रीच ऑब्जेक्ट. यस सर. So in all new generation languages, including Java, Python, where you do not find pointers, they have concept of references. References are like restricted pointers. They also give you an opportunity to reach something which is stored somewhere. अच्छा. ओके. Okay. तो ये दिमाग से निकाल दो, pointer नहीं है. Rather, Java is implemented in C. नीचे जाके देखो तो pointer use किए. We as a Java developer may not use pointer. That's okay. But something like pointer, a concept of references, which are more like constant pointers. They are very much available, and that is something that makes it possible for us to do that. So don't ever say कि Java में address नहीं ले सकते. You always, every day, with every object we get address in Java. The only thing is how it is stored. That's a different way. It's more safer way to handle the objects than riskier way as in C++. So there are pointers, something like pointer. Okay. So it's not like there are no pointers. Restricted pointers, I say. Restricted pointers.
So in the last example, if you had realized, when this function got over, what happened? How many things were destroyed? Tell me. Frame was removed, all objects. All objects. ये destroy हुआ, 10 ये to destroy 11. हुआ, ये destroy हुआ, 10 to 11. But अगर ये statement मैं नहीं लिखता तो क्या प्रॉब्लम होता? ये delete वाला statement नहीं लिखता तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता. ये जो आपने heap पे allocate किया था, that will not get released. Yes, sir. Okay. Now listen to me. वो पिक्चर गलती से डिलीट किया है, रखना चाहिए था. Anyway, मैं जितना उसमें से जरूरी है वही डायग्राम लेता हूँ. देखो, समझो ये आपका फ्रेम था डुइट का. डुइट के फ्रेम में स्टैक पे डुइट का फ्रेम था, उसके फ्रेम में एसपीटीआर था. नाउ टेल मी, ये एसपीटीआर कब तक रहेगा इस फ्रेम पे? जब तक फ्रेम है. हाँ, जब वही तो, कब तक रहेगा फ्रेम? जब तक फंक्शन रहेगा. जब तक फंक्शन रहेगा. वेरी गुड. दिस एसपीटीआर वाज स्टोरिंग एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टोर्ड ऑन द हीप. समझो ये ब्लैक वाला हीप है, तो ये ऑब्जेक्ट हीप के ऊपर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहा था. ऐसे कुछ ड्रॉ किया था हमने, Yes, sir. और ये एड्रेस इसके अंदर स्टोर्ड है पॉइंटर में. करेक्ट? इट वाज स्टोरिंग. इसके पास इसका एड्रेस है. ओके, और ये हीप पे है. नाउ सपोज मिस्टेकनली यू फॉरगेट टू राइट दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा, डिलीट वाला नहीं लिखा, एंड दिस फंक्शन गेट्स ओवर, तो क्या क्या डिस्ट्रॉय होगा? वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय. ऑल वेरिएबल्स एस एक्स एसपीटीआर. यानी ये एसपीटीआर डिस्ट्रॉय हुआ, यानी ये भी डिस्ट्रॉय हो गया ना. Yes, sir. तो ये एड्रेस आपके पास है क्या अभी? No. नो. तो ये अनरीचेबल है. ये कब तक रीचेबल था? जब तक आपके पास वो एड्रेस था तब तक ये रीचेबल था. यस और नो? Yes. यस सर. ओके. एंड जब ये एड्रेस, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसको आप रिलीज ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज इसको अब इसका एड्रेस आपके पास नहीं है. इस एड्रेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. तो जावा आफ्टर दिस, समझो आप जावा में थे, एंड इन जावा यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू राइट दिस स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जब फंक्शन खत्म हो जाएगा ना, तो ये फंक्शन खत्म होने पर ये सब कुछ चला गया. दिस ऑल थिंग इज गॉन. अब इसका एड्रेस कहीं है क्या आपके पास? No. नो. तो जिस किसी का एड्रेस आपके पास नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट द क्वेश्चन इज, जावा को कैसे पता चलेगा कि ये एड्रेस आपको स्टोर करना था, ये आपके पास नहीं है? या ये मेमोरी जब हीप में जाके वो चेक करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि इसका एड्रेस किसी फ्रेम में नहीं स्टोर्ड है? ये कैसे पता चलेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली. व्हाट डज जावा डू? अगर ये जावा में कोड लिखा था आपने, और जब आपने मेमोरी एलोकेट किया, लाइन नंबर 12 पे आपने मेमोरी एलोकेट किया. ओके, लाइन नंबर 12 पे समझो एक ही स्टूडेंट बनाया आपने, न्यू स्टूडेंट. एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनाया. समझो 500 वगैरह नहीं, एक स्टूडेंट बनाया आपने, एक रिकॉर्ड बनाया. तो सपोज ये ऑब्जेक्ट बन गया ऑफ टाइप स्टूडेंट. ये स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया. विद एवरी ऑब्जेक्ट दैट जावा क्रिएट्स, लिसन टू वेरी केयरफुली, विद एवरी ऑब्जेक्ट दैट जावा क्रिएट्स ऑन द हीप, इट एसोसिएट्स वन रेफरेंस काउंटर. इसके साथ एक रेफरेंस काउंटर होता है. यानी इसके साथ एवरी ऑब्जेक्ट इन जावा विल हैव अ रेफरेंस काउंटर एसोसिएटेड विद इट. एक होता है उसके साथ रेफरेंस काउंटर. ये रेफरेंस काउंटर विल कीप अ ट्रैक कि मेरा एड्रेस अब कितने पॉइंटर में स्टोर है. अब बताइए इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कितने पॉइंटर में फिलहाल स्टोर है? एक. तो इस रेफरेंस काउंटर का वैल्यू रहेगा 1. दैट मींस इसका एड्रेस, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस करंटली, दिस ऑब्जेक्ट इज करंटली पॉइंटेड टू बाय 1 पॉइंटर. ठीक है. आगे जाके आपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा हुआ, आपने एक और एक पॉइंटर बनाया था. समझो ये SPTR1 था, दिस वाज SPTR1. आपने और एक पॉइंटर क्रिएट किया, स्टूडेंट स्टार SPTR2 ऐसा, और इक्वल टू लिखा SPTR1. अब एक पॉइंटर में दूसरा पॉइंटर स्टोर करूंगा, तो गेस करो क्या होगा? तो SPTR1 ची इकडे जो ऍड्रेस आहे तो SPTR2 कडे जाणार. व्हेरी करेक्ट. तू कडे जाणार नाही, त्याच्यात पण तो स्टोर होणार. मीन्स Copy. this will also end up storing the same address. Yes. Yes. That means there is not one pointer, but there are 2 pointers pointing to the same block of memory. ये भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये भी यहाँ पॉइंट कर रहा है. Yes, sir. अब 2 पॉइंटर आएंगे तो इसका रेफरेंस काउंटर विल गेट इंक्रीमेंटेड. वो बोलेगा 2 है मेरे पास रेफर करने वाले. Agree your point? So whenever the object का address is stored in any pointer,
ओके रेफरेंस जिस किसी में पॉइंटर में किसी भी रेफरेंस वेरिएबल में तो एज मेनी रेफरेंसेस दैट आर रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट द रेफरेंस काउंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट गेट्स इंक्रीज्ड सो sptr1 मैंने कहा is equal to star sptr2 that means address of this object is now stored into sptr2 as well so the reference counter of this object will just keep on incrementing आगे जाके समझो अगर आपने कुछ ऐसा कहा sptr is equal to null null का मतलब है this object pointer will no longer point over here ये कहीं नहीं पॉइंट कर रहा है ये शायद किसी और स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा है ऐसे भी हो सकता था या फिर आपने ऐसा लिखा sptr is equal to some other student एक दूसरा स्टूडेंट है ये समझो आपका नया स्टूडेंट है ये राधा है और ये जो पहला स्टूडेंट बनाया था वो समझो सैम था तो पहले इट वाज पॉइंटिंग टू सैम सो बोथ ऑफ देम वर पॉइंटिंग टू सैम नाउ sptr1 इज पॉइंटिंग टू अ न्यू ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज राधा तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है राधा नाम का कोई नया ऑब्जेक्ट है कहीं और स्टोर्ड है तो सपोज दिस ऑब्जेक्ट गेट स्टोर्ड समवेयर एल्स इन द मेमोरी वॉच इट वेरी केयरफुली दिस ऑब्जेक्ट गेट स्टोर्ड समवेयर एल्स इन द मेमोरी इसके साथ भी एक रेफरेंस काउंटर रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा 1. 1 रहेगा तो इसका जो रेफरेंस काउंट है इसका वैल्यू फिलहाल है 1 इसका रेफरेंस काउंट 1 है और इसका एड्रेस कुछ और रहेगा समझो FF05 ऐसा कुछ का एड्रेस है एंड दिस इज नाउ ये जैसे यहाँ पॉइंट कर रहा था वैसे दिस विल नाउ पॉइंट ओवर हियर करेक्ट Yes, sir. नहीं कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ देखो ध्यान से व्हेन आई राइट लाइन नंबर 16 राधा तो नया राधा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ समझो ये कहते हैं राधा का ऑब्जेक्ट है तो राधा के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट इंक्रीमेंट हो गया 1 और ये सैम ऑब्जेक्ट है अब सैम को कितने लोग रेफर कर रहे हैं 1. 1 तो इसका रेफरेंस काउंटर विल डिक्रीमेंट बाय 1 लास्ट टाइम टिल द लाइन नंबर 14 में sptr1 sptr2 both the reference were referring to Sam तो Sam का रेफरेंस काउंटर 2 था now sptr1 starts referring to Radha तो Sam का काउंट will get decremented by 1 yes or no Yes, sir. how many references are referring to Sam now only 1 तो इसका रेफरेंस काउंट 1 हो गया आगे जाके प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसा कहा if you say सर ये sptr1 ऊपर int record की 12th लाइन हाँ उधर सैम रेफर कर रहा है और sptr1 यहाँ पे रेफर कर रहा है तो एम्बिग्यूटी नहीं आएगा उसके वजह से लाइन नंबर 12 में और 16 में sptr1 दो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है सैम और राधा को नो श्याम और राधा को लाइन नंबर 16 ना हाँ 16 और 12 16 और 12 sptr पहले सैम को रेफर कर रहा था यानी उसमें सैम का एड्रेस था और अगली बार वो अभी सैम का एड्रेस रखना रेफर करना छोड़ दिया उसने अब वो राधा का एड्रेस स्टोर कर रहा है नोट करो एड्रेस चेंज हो गया FF05 पहले FFFF था यानी ये जो पॉइंटर रेफरेंस पहले राधा को रेफर कर रहा था सैम को रेफर कर रहा था यहाँ अब यहाँ रेफर कर रहा है तो इट इज नॉट रेफरिंग टू टू थिंग्स एट वन टाइम नो रेफरेंस कैन रेफर टू टू ऑब्जेक्ट्स एट वन टाइम इट कैन रेफर टू ओनली वन ऑब्जेक्ट यस ओके सर आपले sptr1 आणि 2 हे रेफरन्सेस आहेत का? references are pointers are what references na they refer to some location memory na so we call them as references refer कर तो ये हो गया आगे जाके आपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा लिखा कि अभी ये sptr1 है ना थोड़ी देर के बाद किसी को रेफर नहीं कर रहा sptr1 is equal to null ptr ये कहीं रेफर नहीं कर रहा तो if I say please sptr is equal to null ptr तो sptr no longer points to anybody तो ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा if it is no longer pointing to anything तो इसके अंदर null आ गया इसके अंदर आ गया आपका एड्रेस एज null तो मुझे बताइए राधा का रेफरेंस काउंट का वैल्यू क्या बन जाएगा क्या बनेगा 0 लाउडर 0 बन गया रेफरेंस काउंट बन गया 0 नाउ एट दिस स्टेज इफ गार्बेज कलेक्शन थ्रेड स्टार्ट्स तो गार्बेज कलेक्शन हर एक ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा सैम का रेफरेंस काउंट कितना है 1 दैट मींस इट इज रिक्वायर्ड राधा का रेफरेंस काउंट कितना है 0 0 दैट मींस इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड यानी देयर इज नो रेफरेंस रेफरिंग टू राधा
यानी शायद आपको इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो इफ द रेफरेंस काउंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स 0, Java identifies, the garbage collection thread identifies this object is no longer required and now this can be garbage collected. फिर Java garbage collection thread इस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकता है। क्यों कलेक्ट किया? उतना एरिया फ्री कर लिया ताकि आप चाहे तो फ्यूचर में यू कैन allocate some other object at that location because that location was no longer required, that object was no longer required, so that has now been garbage collected. So when the pointer points to it, reference points to it, we say the reference count is incremented, and when the reference no longer points to it, the reference count gets decremented. It can so happen that you pass that reference from one function to another. जब तक आपके पास उसका एड्रेस है तब तक वो ऑब्जेक्ट आपको आज न कल उसकी जरूरत है। Java will never garbage collect it. But moment that address is lost, that means no longer no reference is referring to it, Java identifies that object as garbage, so it can be collected. Collected means memory that is allocated for it can be now released and be utilized for some other purpose. This concept of garbage collection is the most simplest idea which was suggested, called as reference counting. Earliest implementation of Java were using this idea. Very simple, but there are number of other techniques like tracing also which is available. So reference counting क्या था अभी जो हमने डिस्कस किया? Reference counting garbage collector distinguishes live objects from garbage. How? By keeping a count for each object on the heap. So they will keep a track. Heap पे कितने objects है उसका एक track रखेंगे. The count keeps track of number of reference to an object. यानी उस object को कितने references refer कर रहे हैं उसका count वो maintain करेगा. When any other variable is assigned a reference to that object, the count is incremented. जैसे I said SPTR2 is equal to SPTR1. Okay, ऐसा कुछ SPTR2 लिखा था या 1 लिखा था मैंने गलती से? SPTR2 is equal to SPTR1 जब हमने लिखा, that means SPTR2 भी SPTR1 को point कर रहा है. And any other reference is also pointing to that particular object, then the count is incremented. When a reference to another object goes out of scope, यानी reference destroy हो गया, or is assigned a new value, यानी राधा को assign किया, then object count is decremented. So whenever the reference refer to it, object counts increments. Whenever the reference derefer it, the object counts get decremented. Any object with reference count 0 can now be garbage collected. This was the earliest technique that was used in most of the JVM. Remember, JVM based languages, Java is not the only JVM based language. PHP is also a JVM based language that also uses the same technique. यही technique use करता है for garbage collection. But this was just one of those techniques which was used for garbage collection. This is not the only technique that is available. There are other techniques also which are there for garbage collection. Let me just quickly mention about those techniques and go ahead. So talking about garbage collection, there is also something called as tracing collectors. What it does, it uses the logic of mark and sweep. Mark means mark what is a garbage and sweep means clean what is a garbage. In the mark phase, the garbage collector travels the tree of references and mark each object that it encounters. Each object that it encounters. Yani exactly ulta. Any object which is not marked should be garbage collected. And the sweep phase, in the sweep phase, unmarked objects are freed, resulting memory is made available to the executing program. Now let me explain this idea for you. What is this tracing collector kind of concept? Listen to a very simple idea. There is a data structure. जैसे आपने array सुना है, ऐसे सुना है लोगों ने array? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. वैसे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पाइथन करे, उन्होंने पाइथन में डिक्शनरी यूज किया रहेगा या C++ में ट्री सुना रहेगा, ट्री मैप कहते हैं. तो ऐसे एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक कलेक्शन है. वो छोड़ दो डेटा ट्री है क्या, वो तो ट्री है क्योंकि मैं देखा हूँ कोड इसलिए बता रहा हूँ ट्री है. बट एनीवे लेट मी से वन थिंग, देयर इज अ कलेक्शन. कलेक्शन मतलब ग्रुप, एक एग्रीगेट है. अब वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम में जितने सारे रेफरेंसेस है उनका एक ट्री है. ऐसा समझो, आपके जितने सारे रेफरेंस है उनका से एक ट्री है. तो एक ट्री का हर एक जो ट्री छोड़ो ट्री का बात ही नहीं करेंगे, आपके पास एक कलेक्शन है, ग्रुप है. जितने रेफरेंसेस है ना उसका एक रिकॉर्ड है आपका. यानी यू हैव information all the references that are there. So what does Java do? During the marking phase, what it does, one after another during the marking phase, it checks every reference. देखो every reference. Reference में क्या होता है? Store probably. Address. Address. किसका एड्रेस है? ऑब्जेक्ट का. Yes sir. जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसे मिलेगा उस ऑब्जेक्ट को टिक करेगा, मार्क करेगा कि ये ऑब्जेक्ट लाइव है, बिकॉज इसका एड्रेस किसी रेफरेंस के पास अवेलेबल है. जैसा ना इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी रेफरेंस के पास है तो उसे मार्क करेगा, मार्क किया. ऐसे उसने सारे रेफरेंसेस को विजिट कर लिया. उसके पास एक कलेक्शन ऑफ रेफरेंसेस है
So it visits all the references. समझो 10 references. पहला reference देखा, हाँ यहाँ है, उसे टिक किया. दूसरा वहाँ है, टिक किया, टिक किया, टिक किया. मार्क किया. तो कितने मार्क कर पाएगा वो? Every reference refers to how many objects directly? 1. 1. तो जितने ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को उसने मार्क कर दिया. Done. Then after it has marked those objects, okay. After it has marked those objects, then it goes into the heap and checks कौन से वो ऑब्जेक्ट है जिनको मार्क नहीं किया गया. All those objects which are not marked are not reachable. Yes, sir. Correct? All those objects which are not marked are not reachable. Garbage collect कर लो. तो tracing, marking and mark and sweep. तो mark में क्या करेगा? Mark करेगा object which are reachable. और sweep phase में क्या करेगा? Any object which is not reachable उसे clear किया जाएगा. Now one question should come to your mind. Indirectly reachable object का क्या होगा? हमारे पास रोहित का रिकॉर्ड है और रोहित के पास गौरव का रिकॉर्ड है. तो गौरव इनडायरेक्टली है. तो कैसे रहेगा फिर? एनी गेस करो. तो गौरव मार्क किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा. कैसे? नहीं सर, नहीं किया जाएगा या किया जाएगा? नाही किया जाएगा. तर जरी मार्क नाही केलं गेलं तरी तो ऍड्रेसच असणार आहे ना पुढे अरे स्टोर पण केला. तो हीप मध्ये चेक करतोय फक्त. ज्या ऑब्जेक्टला मार्क नाही केला ही इज गोना कलेक्ट ऑल द माय ऑब्जेक्ट्स. पण त्याचा ऍड्रेस तर असेल ना, तो आपण पुढे सगळ्या ऑब्जेक्ट्स एड्रेस असतो. देयर इज नो ऑब्जेक्ट विदाउट एड्रेस. तो हाउ विल इट नो कि इसका एड्रेस किसके पास है? ओके, आइडिया इज वेरी सिंपल. हमने कहा वी हैव ट्री ऑफ रेफरेंसेस. मेरे पास सारे रेफरेंसेस होते हैं. तो समझो ऐसा समझते हैं मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, उसमें मेरा आपका एड्रेस आपका है. तो किसी को भी एड्रेस चाहिए तो मेरे उसके पास वो विजिटिंग कार्ड चाहिए, ऐसा एज्यूम करो. वो मेरा रेफरेंस है. तो अगर मेरे पास रोहित का एड्रेस, रोहित का रेफरेंस है, मतलब मेरे पास वो रोहित का एड्रेस के लिए वो वेरिएबल है, रेफरेंस विजिटिंग कार्ड है. येस सर. वो एक रेफरेंस है मेरे पास. उस रेफरेंस से मैं रोहित तक जा रहा हूँ. रोहित के पास भी एक रेफरेंस ही रहेगा ना गौरव का एड्रेस स्टोर करने के लिए. येस सर. करेक्ट. Yes, sir. तो जो हम लोग कह रहे थे ऑल रेफरेंसेस मींस ऑल रेफरेंसेस, ऑब्जेक्ट के अंदर के रेफरेंस रहेंगे वो भी हमारे पास उस ट्री में रहेंगे. दैट मींस रोहित के पास जो एड्रेस है वो भी हमारे पास उस कलेक्शन में रहेगा. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्वेश्चन ही नहीं आता है. ऑल द रेफरेंसेस व्हिच आर देयर इन द प्रोग्राम विल बी प्रेजेंट इन अ ट्री ऑफ रेफरेंसेस. मेरे पास जो ट्री है रेफरेंसेस का, उसमें जितने रेफरेंसेस अपने प्रोग्राम में वो सारे आएंगे. जो रेफरेंस डिलीट होगा वो निकाल दिया जाएगा. जो रेफरेंस जिंदा है वो सारे रेफरेंस रहेंगे. और उस रेफरेंस में से जो ऑब्जेक्ट मार्क कर पाएंगे तो मार्क फेज में रोहित भी मार्क होगा और गौरव भी मार्क होगा. बिकॉज इन आवर कलेक्शन, इन आवर ट्री वी हैव रोहित का रेफरेंस भी रहेगा और गौरव का भी रेफरेंस रहेगा. जिसका रेफरेंस नहीं है वो ऑब्जेक्ट विल बी गार्बेज कलेक्टेड. अंडरस्टूड दिस? क्विक फीडबैक. Nikhil and Nilofer, n square. Nilofer, NG has answered, NP is yet to answer. Yes. Nilofer, आप हो या नहीं लेक्चर में? Yes, Rishikesh. तो रिस्पॉन्ड कौन करेगा? Sorry. Okay. Just talk about NG. It reminds me. यूनिट टेस्टिंग के लिए एक NG का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो निखिल गाड़ी कर याद करो NG क्या है ढूंढ लो. Okay. There is a testing tool where we call it NG, test NG, and that is used for testing purpose as well. तो आप में से कोई टेस्टिंग बैकग्राउंड करेंगे तो याद करो NG. Anyway. So these are various garbage collection. Are these the only techniques which are available? Definitely not. There are several other techniques which are there in the market right now. There are compacting collectors, there are copying collectors, there are generational collectors, there are RFP collectors, there is finalization. And आज जो हम लोग JVM यूज कर रहे हैं उसके अंदर तो चार टेक्निक यूज कर रहा है. Serial, parallel throughput, CMA, G1, और there are so many techniques which are there. Okay, so the techniques that I discussed with you all were all elementary
techniques which are present in earlier generation of Java. The techniques that I discussed with you was just to give an idea as to what is the basic thought process. But these techniques you will hardly ever find in today's generation JVM. आज के generation में JVM में there are far more superior techniques which are used, and in one JVM you will have more than one techniques which are used for different scenarios. It will apply different techniques for garbage collection. Plus garbage collection हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है JVM में, बिना garbage collection का भी JVM हो सकता है. But every JVM that is there in the market today has garbage collection. So garbage collection is always there, almost there, and there are different types of garbage collection techniques which are there. Okay, there is something called as generational collection as well. इसका एक अच्छा सा एक नोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, so that you will know more about generational collection. जो आज का जो JVM है जो यूज करता है, how does it go ahead creating that clearing the memory. I'll add a note about it. जिनको इंटरेस्ट है देखने में कि what is the survivor, what is the old and what is young memory, what is old memory, do read my note, and if you still have some doubt about it, then we can discuss it offline, because these are just additional techniques. और कितने भी techniques discuss करें कोई फायदा नहीं है, because मैं Oracle JVM की टेक्निक बात कर रहा हूँ, that does not mean Microsoft के JVM में वही टेक्निक है, that does not mean IBM के JVM में वही टेक्निक है, but you will get an idea as to क्या लॉजिक लगाते हैं लोग गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, because they want to reduce the amount of time that you are going to waste in unnecessary garbage collection, correct? So there are some fantastic techniques that they have devised for garbage collection. So additional techniques in form of notes जो आप पढ़ सकते हो in your spare time, but that's not going to decide how good or bad Java programmer you will be. Without knowing how garbage collection happen, you can be a successful Java developer. But with this understanding, you will know that if you do not have control over garbage collection, you can never instruct JVM saying do the garbage collection now. हाँ, people tell me कि ऐसा instruction किया जा सकता है. There is a function called as in Java there is a method called as system में there is a method called as GC garbage collect. And unfortunately कहीं बकवास बुक टेक्स्ट लोकल टेक्स्ट बुक पढ़ के आते हैं and they say sir GC को कॉल किया तो garbage collection starts. Never. As a Java developer, you can at the most make a request to JVM, please जरा garbage collect करना, and it is a discretion of the JVM to whether to accept your request or not to accept your request. So there is no way you can force JVM to garbage collect, but we can compel him to garbage collect. वो techniques है, but we cannot force JVM to garbage collect. There is no way JVM will promise you कि आपने कहा इसलिए मैं garbage collect करूँगा भी. No, it will have its own logic when to garbage collect. So you cannot force, even if you call method like GC system.gc and the document, some local documentation says starts garbage collection. No. It only requests the JVM to start garbage collection. You cannot force, you do not have any control over the scheduling of JVM. No control. It's not within our control. It's not like C++ where we'll decide what will start when. It's the JVM which will decide what will start when. You can influence that decision. Influence थोड़ा सा कर सकते हैं. You cannot force when it comes to garbage collection. So that was all about garbage collection. Have you understood? Please let me know. If you have any queries, please ask. I'll clarify. Rishikesh, I Yes, have yes. one query. Yes. That what is a thread? It's a process, lightweight process. Lightweight process. In terms of Java, how we can say what is a thread and all? In terms of Java, but for you to understand the concept of thread, you should know what is a process. Do you know what is a process? Process is we can say process PID which is active and which is doing some kind of work. Okay, it is doing some kind of work, but for it to do some work, it requires some memory. Yeah. It requires some CPU time. Yes. Okay, so every application, I'll just give you an example. Now suppose, अभी Zoom application चालू है. Yeah. Okay, in this Zoom application, or suppose आप MS Word में type कर रहे कुछ. While you are typing, there is a Word application which is running. Yes. That's a process on a system that will have its own PID. Yes. Control Alt Del करके देखोगे तो PID दिखाई देगा ना? Yes. ये देखो everybody. If I say Control Alt Del, can you see that IDs? Windows Linux में देखना चाहिए. Okay, but anyway, every process will have an ID. यहाँ ID दे रहा है क्या? But anyway, यहाँ नाम है process का. These are all the processes running.
Yes. Every process is utilizing some CPU and some memory. Yes. Okay. Every process requires some amount of memory and every process requires some amount of CPU time. Correct? Yes. तो वर्ड जब स्टार्ट करोगे तो वो एक प्रोसेस है, उसका एक पीआईडी है. ओके. पर मुझे बताइए, जब वर्ड में से मैं कहता हूँ स्पेल, जब आप टाइप कर रहे हैं तभी मैंने प्रिंट स्टार्ट किया, या टाइप करते करते मैंने स्पेल चेक चालू किया. कैन बोथ द थिंग्स रन साइमल्टेनियसली? जब मैं टाइप कर रहा हूँ तब वो बैकग्राउंड में स्पेल चेक कर सकता है क्या? बैकग्राउंड में. हाँ. या Yes. प्रिंटिंग कर सकता है क्या? Yes. दैट्स, बट वो जो स्पेल चेक का प्रोसेस है उसके लिए कोई पीआईडी एलोकेट नहीं होगा, बिकॉज इज अ सब प्रोसेस विद इन दैट प्रोसेस. प्रोसेस. सर वो डिटेल्स में पीआईडी मेंशन, Pardon? डिटेल्स में पीआईडी मेंशन है सर. डिटेल्स में पीआईडी था क्या? हाँ. ओके. ओके. पीआईडी मतलब प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन. मतलब जब आप वर्ड के अंदर जो स्पेल चेक कर रहे हैं वो भी एक टास्क ही है ना, मेजर टास्क है ना, Yes. उसका पीआईडी रहेगा क्या? प्रोसेस आईडी रहेगा? स्प्रेडशीट का. हाँ नहीं, वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर आप स्पेल चेक कर रहे हैं, स्पेल चेक थाउजेंड्स Okay. ऑफ पेजेस का है, आप टाइप भी कर रहे हैं और ऊपर आपने स्पेल चेक भी लगाया था, तो स्पेल चेक जो साइमल्टेनियसली रन हो रहा है उसका कोई पीआईडी रहेगा क्या? पीआईडी रहेगा ना. नहीं हर एक रहेगा. चीज. नहीं रहेगा. क्यों? That's a different. I'll tell you. Word is a process. Within that process, there is this task which is running. That is not an independent process to have its own working area. Okay. आप ऐसा नहीं कर सकते, वर्ड चालू है और बाहर से जैसे मैं वर्ड के प्रोसेस बंद कर सकता हूँ, वैसे वर्ड बंद किए बगैर वो स्पेल चेक का प्रोसेस बाहर से बंद कर सकते, किल कर सकते उस प्रोसेस को. Within word we can stop, right? वर्ड को बाहर से स्टॉप कर सकते हैं ना इससे. Yes. तो वर्ड के अंदर जो काम चालू है उसे वर्ड के बाहर से स्टॉप कर सकते हैं क्या? No. That means that is a task which is running simultaneously with other tasks which are happening in Word, but that is a separate kind of process, but it's not a process, it's a thread within that process. Yani, it has its own task to perform, but it will not Okay. have its separate memory area. It is within the process. It's a process within a process. It's a sub process. It's a child, sub भी नहीं कह सकते. It's a thread within a process. Within a process. ये क्यों आजकल अवेलेबल है बताता हूँ. आजकल क्या जो आपके मशीन है नहीं मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी कोर मशीन है. Yes, sir. Yes. करेक्ट. तो एक प्रोसेस चालू है वर्ड का, तो अगर आपको कोई कहे वर्ड में एक ही काम आपको एक समय करना है, या तो टाइप करना है या फिर स्पेल चेक करना है, ये गए दिन पुराने जमाने के. आज वर्ड जब मैं टाइप कर रहे हैं तो 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, तो स्पेल चेक बैकग्राउंड में चालू रहेगा, प्रिंटिंग बाजू में चालू रहेगा और मैं आगे का टाइप भी करता रहूंगा और बीच बीच में सेव भी करूंगा. Agree my point? Yes. So this is carrying more than one task concurrently. साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं, यानी आप टाइपिंग भी कर रहे हो वर्ड में और वो पीछे स्पेल चेक भी कर रहे हैं. Okay. करेक्ट. सो बोथ दिस टास्क आर हैपनिंग. प्रिंट भी कर रहे हैं और स्पेल चेक भी कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल है. चलो टाइपिंग करें तो. Yes. Okay, so both these tasks are happening concurrently at one time. Yes. Tell me, can both work on the same processor? No. No, one processor can carry out two tasks at one time. No. No. So it can be, as a good developer, what we can do is एक कोर पे प्रिंटिंग का काम लगाएंगे और एक कोर पे स्पेल चेक का काम लगाएंगे. So both the tasks are happening at one point of time. You don't have to wait for printing to wait over, so spell check can proceed. You don't have to wait for spell check to wait over, for printing to proceed. Both the tasks can get over at simultaneously as well, एक ही समय में. Okay. करेक्ट. सो ये जो टास्क रन कर रहे थे एक एप्लीकेशन के अंदर, दे वर थ्रेड्स. Okay. Okay. Got it. And as a Java developer, you need to master the thread. I tell people, those who do not master the concept of threading, you are not a Java developer. Because फिर जावा में आपने नया सीखा क्या? तो आप जैसे C और C++ में कोड लिख रहे थे जो पूरा एक ही थ्रेड पे रन कर रहा है, आपने वैसा ही कोड लिखा, एक ही प्रोसेस पे कोड पे रन कर रहा है. You need to make the utilization of new generation hardware. उसका हमें यूटिलाइज करने आना चाहिए. Concurrently, आपको multiple tasks करने आने चाहिए. Say while I'm talking to you, some of you do multitasking. Lecture, Akash had shown me his notes yesterday. Fantastic way he has maintained his notes. Huh? That means he's listening to me. At the same time, he's also taking down some notes.
ये कॉन्करेंट है, एक समय 2 काम कर रहे हैं. तो वी वांट आवर प्रोग्राम आल्सो टू डू मोर देन 1 टास्क साइमल्टेनियसली. Agreeing with? Yes or no? Yes. Simultaneously at one time. ये नहीं कि ये बंद कर दे दूसरा. At one time. At least effect as if it's doing that task one time. तो ये काम करने के लिए हमें थ्रेडिंग जानना जरूरी है. और थ्रेडिंग कहीं कहाँ यूज करना है ये भी पहचानना जरूरी है. ये नहीं कि कहीं भी थ्रेडिंग अप्लाई करेंगे. समटाइम्स वी अप्लाई थ्रेडिंग एट रॉन्ग प्लेस और प्रोग्राम फास्ट रन करने की जगह ज्यादा टाइम ले लेता है. तो थ्रेडिंग हैज टू बी अप्लाइड intelligently at most appropriate places, जैसे जहाँ इसका benefit मिल सके. And I'll be teaching you concept of threading in quite a detail. But thread is a small task which is running, small or big, जो भी task है, which is running inside the process. And there can be multiple tasks which are running inside the process. जैसे मेरा JVM चालू था और वो अपना प्रोग्राम मेरा कैलकुलेशन रन कर रहा था, इनपुट के लिए ब्लॉक हो गया and this threads comes to life. ये रन कर रहा है बैकग्राउंड में and this does the garbage collection. So garbage collection का कोई thread process बाहर नहीं है. It is within the JVM itself. It is doing 2 tasks. एक तो evaluation of instructions that you have written, and when that gets blocked, probably doing garbage collection. So both these tasks are happening simultaneously. There is another thread, event thread. क्या आपने input दिया है नहीं दिया है कैसे पता चलता है? वो भी monitor करने के लिए एक event thread होता है. That keeps monitoring. User ने input दिया क्या दिया, so it will notify the system. Input आ गया है, चल काम कर, kind of thing. So multiple threads are running in Java at one point of time. And we can see those threads luckily. Because there is some tool. अभी JVM tool interface में बताऊंगा. There are tools. That tools will help you to visualize and see कौन से threads running है. And you will be surprised to see the number of threads that may be running at one point of time. Nilofer, did you get an idea as to what is a thread? Yes, Okay. now it is clear. There is much to the thread. 15 hours का discussion only on threads. 15 घंटे सिर्फ threads बात करेंगे. There is so much to discuss because that's what makes you a powerful Java developer. आजकल के हार्डवेयर को अगर आपको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, i5, i7, तो उसका पावर यूटिलाइज करना है. Unless you do not know multi-threading, I tell people, अगर आपने कहा है मुझे जावा आता है, थ्रेडिंग नहीं आता है, you shouldn't call yourself a Java programmer. That's how simple and straightforward. That's the importance of this topic. So we'll be discussing concept of multi-threading in complete detail. Every aspect of that I'll discuss. Okay, any other question, anybody? सर बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं कि मतलब वो आपने बोला था कि जहाँ पे एप्लीकेशन 24/7 लाइव रहेगा, हाँ. तो वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन कैसे होगा? वहाँ गार्बेज कलेक्शन कैसे? वही तो कह रहा हूँ ना. गार्बेज कलेक्शन करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका टास्क 24/7 जो रन कर रहा है वो रोकना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ओके, आई सेड दिस इज सिस्टम लेवल थ्रेड. दिस फॉर fraction of milliseconds, nanoseconds, that task can stop, and that millisecond it can mark, and then another millisecond it can just continue the task. Blink of eye, you will not even realize. अब मुझे बताइए, मेरे पास i5 है. क्या है मेरे पास? i5 है. तो कितने टास्क रन हो सकते हैं मेरे मशीन में एक समय? कैसे 10? 5 प्रोसेसर से तो 10 काम कैसे होंगे? 5 हो सकते हैं. यस सर. यस, जरा देखो तो. कितने रन हो रहे? 5 है. हर जगह एक्शन है कि नहीं? 5 हो रहे, ज्यादा हो रहे? ज्यादा. कितने ज्यादा देखना है? Huge? Yes sir. Okay, how is this happening? That's because it is using various techniques. One of the technique or simplest algorithm is round robin. यानी समझो आप कितने लोग हैं? आप 20 लोग हैं और 20 लोगों के लिए एक टीचर है. Can I answer everybody's question at one time? सबने एक साथ क्वेश्चन पूछा तो? No sir. No? Correct? But I can still answer everybody's question. How? I say, Akash, you have another next 1 minute. Amruta, आपका next 1 minute. Ankur, आपका एक next minute. यानी 1 minute I'll ask all questions of Akash. Listen up. Yeah, 1 second. And after 1 second, I switch over to Amruta. After 1 second, I go to Ankur. And I again come back to Akash within 1 second. क्या आकाश को within 1 second अगर मैं 3-4 जन के आंसर देके वापस आ जाऊं, will Akash even realize that सर ने मुझे मेरा आंसर देना बंद किया था and again I started answering that thing?
सर विदिन 1 सेकंड नहीं पता. नहीं ना. तो यहाँ when the processor switches over from one process to another, the time slot it allocates is not more than 200 millisecond. कितना? Not more 2 than. सेकंड. Not Two- more than. उससे कम ही 200 देता है. millisecond. Nanosecond में देता है. I'm saying largest time slice इसमें allocate is somewhere like 200 millisecond. अब 200 millisecond में उसने कोई काम चालू करके बंद किया, वापस चालू किया, क्या फर्क भी समझ में आने वाला है? नो सर. नो सर. That's precisely. आपने कंट्रोलर देख देखा क्या मूवमेंट हो रहा था ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. यस सर. टास्क मैनेजर देखा क्या? यस सर. यानी क्या हो रहा है? एक बंद हो रहा है स्टार्ट बट देन ऐसा नहीं कि मेरा एंटीवायरस बंद हो गया उस दौरान. एक इतना फास्ट हो रहा है स्विचिंग ओवर दैट वी एज ह्यूमन विल नॉट इवन अंडरस्टैंड माय एंटीवायरस हैज स्टॉप्ड फॉर सम नैनोसेकंड एंड देन जूम वाज रनिंग. अभी तो आप पूरा लेक्चर पिछले 1.5 घंटे से लगातार देख रहे हो. यस सर. तर यानी क्या जूम ही एक एप्लीकेशन है क्या? ना, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच आर रनिंग. एंटीवायरस भी चालू है बैकग्राउंड में पावर पॉइंट भी चालू है, बैकग्राउंड में मेरा नोटपैड प्लस भी चालू है. सारे चालू है ना. तो सारे कैसे चालू है एक साथ? Okay, yes, we failed to realize that the CPU went to answer that switch over to that particular process and again came back. That's a time sharing concept that it is. तो आपका जो क्या ना था 24/7 तो उसमें टाइम शेयरिंग यूज कर लेता है concept. तो थोड़ा गूगल करके देखो. Although I'll be talking about this in more detail when you start learn threading, but उसके पहले अगर if you are eager to know, read about time sharing concept. Is यस. it okay? यस. Okay. Any other question? Okay. So hearing no questions, we stop over here today. We have finished with the second most important aspect about Java, that is garbage collection, and we have discussed in quite a detail. इसका एक note में जरूर upload करूँगा generational garbage collection. Do read that note. That will give you more insight as to how it works. And third will be the last point, that is Java runtime system. ये क्या है? And what are the various ways in which you can launch a Java program? That is what we are discussing. Okay, Java tools where उसमें discuss करेंगे. तो कल का session, next session will be about what did I say? JRE. JRE is what we'll discuss. Okay, that's all for today. Thank you all. Take care. Love you all. Bye bye.